budget speech, huh? No. You want the budget speech? No, There she hasn't said a word. Huh? She hasn't said a No, word. just open the budget speech in case we have to refer to it. Let them read it. Does that mean? Spend time. This is the budget speech. Long speech, 63 pages. Shall we start? No, I've got all copies. Has everybody got a copy each? Yes. Hindi will come later. Yes, after the budget. I think you can start. Okay. There's a fly here. Good evening to all of you. I have a prepared statement as an opening statement. I believe all of you have copies of the statement. So I may not read every line of the statement. I will read portions of the statement, and then you can refer to the rest when you telecast or write. You have listened to the budget speech of the Honorable Finance Minister, as I did. The budget documents were uploaded only about 3 hours ago, and it will take time to read and analyze the documents. On behalf of the Congress Party, I shall make a few observations and comments, and my colleague, Ms. Supriya Srinath, will add more observations. I have already tweeted that I am happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto after the Lok Sabha 2024 elections. She has virtually adopted the ideas underlying our proposals on employment-linked incentive ELI scheme, the apprenticeship scheme with an allowance to the apprentice, and in the abolition of the angel tax. I welcome her to borrow our ideas, and I wish she had borrowed or adopted many more ideas from the Congress manifesto. This morning, I had created a template to comment on the budget. In the first part of this statement, I have set out our expectations of the budget. In the second part, I have noted the relevant statement on the budget speech, whether there was a response in the budget, and if so, what was the response. You will notice on some matters there was no response at all. First, unemployment. According to CMIE, the All India unemployment rate is 9.2%. The response of the government is too little and will have only little impact on the grave unemployment situation. The claim that the schemes announced by the Finance Minister will benefit 290 lakh persons is highly exaggerated. She has given three numbers:
210 lakh, 30 lakh, and 50 lakhs. Each one of the numbers is highly exaggerated. 2. Inflation is the other major challenge. WPI inflation is 3.4%. CPI inflation is 5.1%. And food inflation is 9.4%. The Economic Survey has stated that the deflator for manufacturing has been assumed as 1.7%. Roughly half of the WPI inflation. The deflators assumed by the government have been severely criticized by several knowledgeable economists. Unless the puzzle of the deflator is resolved, it is not possible to unquestionably accept the claimed GDP growth of 8.2% in 2023-24. Besides, the GDP growth rate is no answer to the huge challenge of inflation. The Economic Survey dismissed the issue of inflation in a few short sentences. The FM dismissed it in 10 words. The finance ministers dismissed inflation in 10 words in paragraph 3 of our speech. We deplore the casual attitude of the government, and nothing in the budget speech gives us the confidence that the government will seriously tackle the issue of inflation. Education is widespread but of poor quality. Nearly one half of the children are unable to read or write a simple text in any language and are numerically challenged. They are not fit for any skilled job. The central government must drive and help the states address these fundamental problems. The other issue concerning education is NEET and the scandal-ridden National Testing Agency. Several states have demanded that NEET should be scrapped and the states should be free to adopt their own methods of selecting candidates to various courses in medical education. The budget has no response. I did not hear the finance minister refer to school education now. Yet the government is stubbornly clinging to NEET. You will recall, NEET is an examination at the end of school education. Interestingly, against the BE of rupees 1,16,470 crore on education, the government spent only rupees 1,08,878 crore. 4. Health care is better but not sufficient. Public health care is growing quantitatively but not in quality. Out-of-pocket expenditure is still about 47% of total health expenditure. There is a grave shortage of doctors, nurses, medical technicians, and diagnostic equipment and machines. The central government's expenditure on health care has declined to 0.28% as a proportion of GDP and to 1.9% as a proportion of total expenditure until the last year. The budget speech, there is no response. I did not hear the finance minister speak about the grave deficiencies in public health care. Moreover, against a BE of rupees 88,956 crore, the government spent only rupees 79,221 crore. 5. Wages have stagnated in the last 6 years after adjusting for inflation.
between 2017-18 and 2022-23, the average monthly earnings of workers were: self-employed worker, rupees 12,800 per month; casual or daily labor, rupees 7,400 per month; and regular wage labor, rupees 19,750 per month. We demand that the minimum wage should be fixed at rupees 400 per day for every kind of employment. While some relief has been given to the tax-paying citizen in the 0 to 20% tax bracket, no relief, I repeat, no relief at all, has been given to the poorer sections of the people, especially those who are non-tax-paying wage laborers and casual daily laborers. The government seems to be blissfully ignorant of its own statistics that wages have stagnated in the last 6 years while inflation is raging, and such workers are not paid a decent minimum wage. 6. Farmers are mobilizing to protest. One of their demands is that the MSP announced for an agricultural produce must be backed by a legal guarantee. The Congress had in its manifesto promised to provide such a guarantee. No response in the budget speech. Let's wait to hear from the farmers. 7. Owing to massive unemployment, many students who had availed of educational loans have defaulted in payment of interest and or repayment of the principal. There is a demand that the government should write off the unpaid balance of educational loans as a one-time measure of relief. The response: the government has unusually spoken about giving education loans. They did not say that in the previous budget speeches. They are talking about giving education loans. But what about the huge burden of unpaid education loans? Students and their families were hoping that, given the acute unemployment situation, the government would give relief to the current borrowers. They must be bitter and disappointed. 8. Several political parties, including the Congress, have demanded that the ill-conceived and discriminatory Agnipath scheme should be scrapped forthwith, and the armed forces should resume the time-honored methods of recruitment. The response: there is no response. The agitation to scrap the Agnipath scheme will continue. So I have listed major issues of our concern. I have not gotten to macroeconomic analysis or analyzing the numbers. I'm talking about the common citizen of India, the youth, the students, the farmers, the laborers. They have demands, and those demands have been articulated by every political party in the recent elections. The Congress was among the first party to carefully articulate those demands. I'm afraid the first budget of the new government has left us very, very disappointed. आपका बहुत धन्यवाद श्री चिदम्बरम जी। जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, मैं मोटे तौर पर उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज बजट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुए थे, तो उसको और डिटेल में देखकर हम आपको एक और डिटेल टिप्पणी देंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो बड़ी बातें हैं उस बजट पर आपको कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस मंच से मिल रही है।
ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में, ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। यहां पर मोटे तौर पर 7-8 अंकों में कुछ बातें हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और यह हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पॉन्स में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है और रिस्पॉन्स में कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग, 3 तरह की स्कीमों में करीब 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है। दूसरी बात महंगाई की, ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है और उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे में 1.7% के एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर की बात की गई है। इन नंबर्स को जस्टिफाई करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस डिफ्लेटर के नंबर से यकीन नहीं रखते हैं और यह भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कृषि सिर्फ 1.4% पे और कंजम्पशन जो 2/3 हिस्सा होता है जीडीपी का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बोले गए थे। वित्त मंत्री ने अपने तीसरे पैराग्राफ में महंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं। तो महंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी सामानों पर टैक्स को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दी है। तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है और ये सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुणवत्ता उसमें कम है। आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ना उस तरह की मैथ कर सकते हैं, ना उस तरह का गणित कर सकते हैं और यह भी माना जाता है कि उस तरह की स्किल नहीं है। तो शिक्षा पर कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी था। एक और बात, और यह बहुत बड़ी बात आज की तारीख में, यह बहुत गर्म मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा नीट का है। नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई, नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है, 12वीं के तुरंत बाद की परीक्षा है और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा, लेकिन नीट पर एक शब्द नहीं बोला वित्त मंत्री ने। स्कूल एजुकेशन का यह हाल है कि लगातार बजट के बनिस्पत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है और पिछले बार के बजट में 1,16,417 करोड़ रुपए खर्च करने की बात थी, लेकिन जो अनुमानित, जो रिवाइज्ड हुए हैं फिगर्स, उसमें वो 1,08,868 रुपए खर्चा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर, शिक्षा जैसी चीज पर कटौती की गई है। चौथा पॉइंट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का है और यह सर्वविदित है, सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केयर का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की कमी तो है ही, जांच की मशीनों की, डायग्नोस्टिक्स की भारी कमी है और यह माना जा रहा था कि हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्चा ज्यादा किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी जीडीपी के बनिस्पत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है। और सुनने की बात यह भी है कि पिछली बार का जो बजटेड अमाउंट था वो 88,956 करोड़ था, खर्च
80,000 करोड़ से कम किया गया, 8,000 करोड़ की से ज्यादा की इसमें भी कटौती की गई। पांचवा जरूरी पॉइंट है कि आय जो थमसी गई है, जो वेज बिल थमसे गए, जो लोगों की इनकम और आय बढ़ नहीं रही है, लगभग 6 साल से लोगों की इनकम एक जैसी प्रतीत हो रही है। वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वरोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रति माह। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं, और जो मजदूर हैं वो 19,750 कमाते हैं। हमारी हमेशा से डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि 400 प्रतिदिन की न्यूनतम आय हर श्रेणी की होनी चाहिए। इस श्रेणी की जो आय है, मजदूरों की जो आय है, वो 400 रुपए प्रतिदिन पर फिक्स किया जाए। ये हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20% टैक्स ब्रैकेट के अलावा किसी भी टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं है, और खास तौर से दिहाड़ी मजदूर, वो लोग जो शायद टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो गरीब और गुर्बत से जूझ रहे हैं, पिछले 6 सालों में जिनकी इनकम नहीं बढ़ी है, उनको कोई भी राहत, कोई भी रियायत नहीं दी गई है। छठा बड़ा पॉइंट, और ये कृषि को लेकर है। हमारे देश की 65-70% लोग कृषि से संबंध रखते हैं। एक ही मांग लगातार किसान कर रहे हैं, किसानों की शहादत भी हो गई, किसान आज भी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हमें मिलनी चाहिए। इस कानूनी गारंटी का उल्लेख उस घोषणा पत्र में भी है कांग्रेस के, जिससे कॉपी पेस्ट करने का तमाम काम वित्त मंत्री ने किया है। काश उन्होंने यह भी किया होता, लेकिन रिस्पांस में उन्होंने कृषि का बजट घटाया है एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट, और एक यह भी सत्य है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर, कानूनी गारंटी पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। सातवीं बड़ी बात, एजुकेशन लोन्स को लेकर कहा गया, और क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों की आय कम है, महंगाई ज्यादा है, जो एजुकेशन लोन लिए गए थे, हमारी ये मांग थी, हमारे घोषणा पत्र में भी हमने अंकित किया था कि एक बार जो आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स हैं उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और रिस्पांस में एजुकेशन लोन देने की बात हुई, लेकिन जो एजुकेशन लोग लेकर आज जूझ रहे हैं उस एजुकेशन लोन को चुकाने में, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनके परिवार की आय कम हो गई है, वो महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया, और वो जरूर इससे निराश होंगे। अंत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय अग्निपथ स्कीम को लेकर है। लगातार हम देख रहे हैं कि सेना उसका विरोध कर रही है, लगातार शहीद परिवार उसका विरोध कर रहे हैं। दो तरह की भ्रांति करने का, दोयम दर्जा सेना के एक वर्ग को देने का विरोध किया जा रहा है, और हमारी शुरू से मांग ये रही है, हमारी मैनिफेस्टो में था कि अग्निपथ स्कीम को विड्रॉ किया जाए, लेकिन अग्निपथ स्कीम पर भी एक शब्द नहीं था उसको खत्म करने का, उसको विड्रॉ करने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं था। आपके सवालों का स्वागत है। प्लीज डायरेक्ट योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश टू बिगिन विद, or even in Hindi. Hi, Smita Sharma. Mr. Chidambaram, a question to you. You know, it feels like they are giving more incentives perhaps to the new tax regime to force people to move to it. If you were the finance minister today, would you have kept 2 tax regimes to begin with? Which one would you have preferred? और एक हिंदी में अगर सुप्रिया आप सवाल का जवाब दे सकें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस से इंडेक्सेशन रिमूव किया गया है, उसका रियल एस्टेट पे क्या असर रहेगा, और क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर ही अब देखा जाएगा? See, a 2 tax regime is a bad idea. If you want to introduce a new tax regime, you should have announced it well in advance and say, from this financial year, everybody has to move to a new tax regime. A 2 tax regime is unacceptable and a bad idea. It will lead to tax arbitration, and people will be confused whether they should remain in the old regime or switch over to the new regime. I'm told it's even more complicated, that if you can switch once, you can switch back, but if you switch a second time, you can't switch back. I mean, I'm thoroughly confused. I don't think they've given great incentives to switch over to the new tax regime in this budget. They did it in the earlier budgets. This time they've only reduced the tax effect by enlarging the slabs. But that will benefit only
people in the 0 to 20% tax bracket. I don't think it benefits anyone above the 20% tax bracket. The answer to your question is I do not and I would not support a two-tax regime. On the other question about long-term capital gains, there is, as I speak, there is total confusion. They have removed the second proviso to section 48, but the third proviso refers to the second proviso. So unless you go through the fine print of the finance bill and read it carefully and analyze it carefully, I can't come to any conclusion. But by and large, the commentators on television seem to think that as far as real estate is concerned, the indexation benefit has been removed, and any sale after 23rd of July 2024 will be without the benefit of indexation. Now, a large number of people who have bought houses and the value is appreciated will certainly suffer. But as I said, I would reserve my judgment on the effect of the tax changes. जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा कि LTCG और इस पर बहुत कंफ्यूजन है. सेकेंड प्रोवाइजो को सरकार ने रिमूव किया है, लेकिन थर्ड प्रोवाइजो सेकेंड प्रोवाइजो को रेफर करता है, तो उसकी एक बहुत विवेचना करनी पड़ेगी. लेकिन जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडेक्सेशन हटाया गया है. लोगों का ये मानना है, सोशल मीडिया और टीवी पर इस पर डिबेट चालू है. और अगर इंडेक्सेशन हटाया जाएगा तो अगर किसी का पुराना घर है और वो आज की तारीख में बेचे तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडेक्सेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं. और ये मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है. आपने 10 लाख में घर खरीदा, अगर आप 50 लाख में कल तक बेचते तो आपको इंडेक्स वैल्यू माइनस जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता. आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा. इससे काले धन में भी मुझे लगता है और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा. पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोवाइजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे. सुप्रिया जी, चिदम्बरम साहब, सवाल है कि आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त में एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं की गई. आज आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इसके लिए तैयार है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जा सके? Please understand, 10 years ago, there was no clamor for a legal guarantee. So why don't you ask finance ministers, if they are alive, 20 years ago, why did you not give a legal guarantee? Every response has to be contextual. Today, there is a clamor for a legal guarantee. The government of the day must respond to that demand. Either it should say, we accept the demand, or we do not accept the demand. There's no point in asking, why did you not give a legal guarantee 10 years ago? My answer is simple. 10 years ago, there was no demand. There was no widespread demand for a legal guarantee. 10 years later, there will be another kind of demand. The government of that day will have to respond to that demand. Well, we think it's feasible. We have put it in our manifesto. It's possible to give a legal guarantee for the MSP. Sir. Sir. Okay. Sorry. Sir, Andhra Pradesh has been given a special package. Bihar has been given incentives. Do you think that opposition rule states have got a raw deal in this budget? Simple. If those announcements had not been made, Mr. Naidu and Mr. Kumar would have withdrawn support. These are what we call life, what is that? Lives, in a swimming pool, lifelines. Mr. Modi is
saving the life of his government. Unless you want his government to come to an end, you will appreciate him. He is now bending down to Mr. Naidu and Mr. Kumar and says, I'm saving my life. You have saved my life. So please take whatever you wanted. And if they make more demands, he will concede that demand. मैम मेरा सवाल मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कई सांसद हैं जो ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के वहाँ सांसदों ने प्रदर्शन तक किया संसद के बाहर कि नाम तक नहीं लिया गया हमारे राज्य का, और ऐसे चुनाव ऐसे क्षेत्र ये राज्य हैं जहाँ पर चुनाव भी होने, आपको लगता है इसका असर वहाँ पर पड़ेगा क्योंकि उनको कुछ खास तरजीह नहीं दी गई और केवल इन 2 राज्यों को तरजीह दी गई है? आप सिर्फ उन राज्यों की बात क्यों कर रहे हैं जहां प्रदर्शन बुरा रहा? जहां प्रदर्शन अच्छा रहा, 87 सीटें थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिलाकर, 84 बीजेपी में ने जीती। उन राज्यों को क्या मिला? जहां पर प्रदर्शन बुरा रहा वहां पर हो सकता है बदला लिया जा रहा हो, जहां प्रदर्शन अच्छा रहा वहां पर भी कुछ नहीं दिया। तो जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, ये अपनी सरकार को बचाने की, अपनी कुर्सी को बचाने वाला बजट था और कुर्सी को बचाने के लिए सारी कवायद की गई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। Sir, earlier the Congress party have made several demands regarding the railway safety, but in this budget there is no such kind of announcements or something which is being promised by the government that has not been fulfilled regarding the safety of railway, and no such kind of budget which can give some relief to the common man, because the manner in which the ticket fares have been increasing, so no such relief has been given. What's your response to that, sir? There are many, many demands relating to the railway. If there had been a separate railway budget and there was a railway minister presenting a budget, these matters would have come up prominently. The finance minister has devoted a few paragraphs to talk about new railway projects. But there is no mention about safety of railway. Railway safety is at its lowest point. There is practically a railway accident every month. And I think the last 2, 3, 4 months, there has been one accident every month. There's no mention of Kavach. There's no mention of the kind of expenditure that is being devoted to railway safety. There is no talk about the coaches and the bogies for the poorer classes being reduced. There's no talk about increasing railway fares. Poor people are being pushed to buy higher price tickets for so-called premium trains. I think there is a lot of issue about the railways. We have demanded a separate discussion on railways, but that was denied in the last occasion. Let us see if in this budget session the government will agree to a full-fledged discussion on railway, either in the demand for grants for railways or as a separate discussion. Thank you very much for being here with us in this post-budget press conference. Thanks very much. Oh, thanks.